Hello friends, today's our topic is eukaryotic cell. In the last class we studied about the discovery of cell and prokaryotic cell. So now here is eukaryotic cell. In the eukaryotic cell, according to name, eu plus karyon. Eu means new and developed and karyon means nucleus. So here is well defined nucleus is present inside the eukaryotic cell. We can see in the picture also कि ये जो इसके अंदर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है ये साइटोप्लाज्म में है, लेकिन इसके ऊपर एक न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है, दैट इज़ न्यूक्लियर मैम्ब्रेन. और न्यूक्लियर मैम्ब्रेन जो है वो इसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो कि हम न्यूक्लियस कहते हैं. Inside the nucleus, semi-solid nucleoplasm and several thread-like chromatin fibers are also present, and these fibers carry genes. And some granule-like structure, nucleolus, also present inside the nucleus. So, in the eukaryotic cell, fully developed nucleus is present, and there is membrane-bound organelles. जैसे कि पिक्चर में है rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, then Golgi body, mitochondria. These all are membrane bound organelles, and these are present only in eukaryotic cell. And eukaryotic cell size is very large, and there is outer covering of the cell is cell membrane. प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है आउटर कवरिंग के फॉर्म में, दैट इज़ वेरी रिजिड, and in the eukaryotic cell there is outer covering of cell membrane. Now this is an overview of cell. We can see example of human chick cell. In the human chick cell, here is given in the picture, सेल इज़ कवर्ड विद द सेल मैम्ब्रेन. जो आउटर कवरिंग है वो सेल मैम्ब्रेन की है, एंड इन द सेल देर इज़ न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट एंड दैट इज़ वेल डिफाइंड. इनसाइड द न्यूक्लियस देर इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, chromatin fibers and nuclear membrane as a envelope present inside the cell. तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को सेल से सेपरेट कर रही है. तो ये ह्यूमन चिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल का ही एग्जाम्पल होता है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज and eukaryotic cells are very large in size. Then second one, they have rigid cell wall as a outer covering in the prokaryotes, but in the eukaryotic cell there is cell wall is absent, there is outer covering is cell membrane. Then third one, membrane bound organelles just like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, these all are absent in prokaryotic cell, but in the eukaryotic cell these membrane bound organelles are present. Then fourth one, genetic material that is not enclosed by nuclear membrane, that means nuclear membrane absent, but in eukaryotic nuclear membrane is present, जिसकी वजह से कि न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है. Then last, there is only single chromosome is present in prokaryotic cell, but in the eukaryotic so many chromosomes are present in linear form. Okay friends, in next video I will bring structure of cell and difference between plant and animal cell. Okay friends, bye.